अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद तो सब खैर सां हूंदो। अज वरी इंग्लिश क्लास सां गॾु मां मुफ्तावर मुगल हाज़िर आहियां। लास्ट डेज में सर शफीक तव्हांखे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जे बारे में इलाही कुछ पढ़ाए चुका आहिनि ऐं क्लास 2 जी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐं उहो बुक स्टार्ट कराए चुका आहिनि। सो उहो जेको क्लास 1 ऐं क्लास 2 में जेके कॉम्प्रिहेंशन्स आहिनि या जेके बि ॻाल्हियूं ॾिनल आहिनि उहे एतिरियूं जेके आहिनि न से एडवांस कोन्हनि के बस बेसिक आहिनि बिल्कुलु ॿारनि जे लाइ। सो असां सोचो त उहे जेके ॿ बुक्स आहिनि उन्हनि खे थोरो रिव्यू ॾेई करे ऐं वरी असां क्लास 3 जी बुक ते अची वञूं जेको थोरो वधीक माना चइजे त क्रिएटिव आहे ऐं उन सेंस में चवंदासीं त थोरो क्लास 1 ऐं क्लास 2 खां हार्ड आहे। ठीकु आहे। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अॼु व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 3 बुक। ठीकु आहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जेको तव्हांखे ख़बर आहे ऑलरेडी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छा आहे, स्किमिंग ऐं स्कैनिंग छा हूंदी आहे, ये कहिड़ियूं टेक्निक्स आहिनि, इन्हनि खे यूज़ करे असां कहिड़े नमूने सां जेको कॉम्प्रिहेंशन आहे, जेको टेक्स्ट आहे, उनखे पढ़ी सघूं था। ओके, सो लेट्स मूव। Okay, so first of all, reading comprehension छा आहे, हिकु रिव्यू मां तव्हांखे ॾेई छॾियां थी। Reading comprehension is ability to read the text, ठीकु आहे, process it and understand its meaning। प्रोसेस कयो, उनखे रीड आउट कयो। पहिरियां त एबिलिटी तव्हां में हुअणु खपे त तव्हां उनखे पढ़ी सघो, रीड आउट करे सघो। ठीकु आहे। देन प्रोसेस इट, उनखे प्रोसेस करे सघो पंहिंजे दिमाग़ में, उन्हनि शयुनि खे, उन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खे प्रोसेस करे सघो, अंडरस्टैंड करे सघो उनजी मीनिंग खे, सम्झी सघो उनजी मीनिंग खे। ठीकु आहे। हाणे एम छा हूंदो आहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो? बेसिकली इट has two aims। first of all, vocabulary तव्हांजी बिल्टअप थींदी आहे। vocabulary जी थोड़ी चवंदा आहियूं असीं त तव्हांखे ख़बर पवंदी आहे, न्यू वोकेबलरी तव्हांजी बिल्ड थींदी आहे। उन खां अलावा टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, त टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन छा हूंदो आहे? सम्झणु हूंदो आहे टेक्स्ट खे। त जेके क्वेश्चन्स आहिनि, जीअं हाणे टेस्ट जे हिसाब सां अगरि असां ॻाल्हि कयूं त रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जेको टेस्ट में ॾींदा या जेको ईंदो आहे अक्सर, उन में इहो हूंदो आहे त हिकु तव्हांखे पैसेज ॾिनल हूंदो आहे, उन मां क्वेश्चन्स तव्हांखे कढणा हूंदा आहिनि। हाणे छा हूंदो आहे त उन ई पैसेज ते कुछ क्वेश्चन्स हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे करणा हूंदा आहिनि। जेको ग्रामर पार्ट हूंदा आहे उहो बि अक्सर जेको हूंदो आहे उन ई पैसेज मां निकितल हूंदो आहे। प्रेपोजिशंस हुजनि, एंटोनिम्स हुजनि, सिनोनिम्स हुजनि, उन सां अलावा पंक्चुएशन अची थी वञे या वर्ब्स, एडजेक्टिव या कुछ भी एडवर्ब्स असीं चऊं, जेके भी क्वेश्चन्स अचनि त उहे कॉम्प्रिहेंशन मां ई निकितल हूंदा आहिनि। त अगरि असां टेक्स्ट सम्झी वियासीं, ठीकु आहे, त असांखे ख़बर पइजी वेंदी। उन खां अलावा के क्वेश्चन्स जनरल भी हूंदा आहिनि। त व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पैराग्राफ? जीअं लास्ट टेस्ट में असां तव्हांखे क्वेश्चन ॾिनो हुयो जेको पोल्यूशन ते हुयो, टेक्स्ट जेको हुयो। सो उन में हुयो त व्हाट इज द थीम ऑफ दिस टेक्स्ट, पैराग्राफ जो थीम छा आहे, उन जो मेन आइडिया छा आहे। ठीकु आहे। सो दिस इज हाउ, दिस इज द पर्पस व्हाई वी रीड एंड व्हाई वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड व्हाट इट एम्स टू लाइक लर्न। छा असां सिखी सघूं था हिन मां? वोकेबलरी बिल्टअप थिए थी, टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन थिए थो। ओके, लेट्स मूव ऑन। हाणे कॉमन अप्रोचेस जेके हूंदियूं आहिनि न, त स्टूडेंट्स जा तरीक़ा हूंदा आहिनि, अप्रोचेस या स्ट्रेटजीस चऊं असीं, डिफरेंट हूंदियूं आहिनि। ठीकु आहे। सो ये स्ट्रेटजीस जेके हूंदियूं आहिनि न, के स्टूडेंट्स ईअं कंदा आहिनि त पूरो पैसेज पहिरियां पढ़ी छॾींदा आहिनि। ठीकु आहे। पहिरियां पूरो पैसेज पढ़ी छॾींदा, उन खां पोइ उन्हनि जो टाइम इलाही घटि बची वेंदो आहे, पोइ हू क्वेश्चन्स आंसर्स ते अची वेंदा आहिनि। ठीकु आहे। हाणे अगर तव्हां एॾो टाइम पैसेज ते हण छॾंदव त क्वेश्चन्स जेके हूंदा न, उन्हनि खे सॉर्ट आउट करण जे लाइ तव्हांखे इलाही टाइम जी ज़रूरत पवंदी। ठीकु आहे। सो पहिरियां अप्रोच इहा आहे। हाणे हिते ॾिसो, चवनि था त रीड द एंटायर पैसेज एंड देन आंसर द क्वेश्चन्स। दिस इज द वन अप्रोच और स्ट्रेटजी दैट वी कैन यूज। ओके, the subject of passage, we can know if we are reading the passage first, then we can get the idea of subject of the passage, main idea of the passage, the tone of the author of the passage। tone मतलब केड़ो उन जो स्टाइल आहे, केड़ो टोन आहे, केड़े तरीके सां उन जेको आहे सो पैसेज लिखियो आहे। ठीकु आहे। हाणे सेकंड वरी छा हूंदो आहे, instead of reading the entire passage, what we do, we read critically the first and last paragraph। ठीकु आहे। फर्स्ट ऐं लास्ट पैराग्राफ तव्हां पढ़ंदव न, अगर तव्हां मेन बॉडी खे थोरो स्किप करे विया हो शुरू में,
For example, you got the test, and then you are just reading first and last paragraph, and then you are going to the questions and finding out the answer of the questions. So this is how entire passage पढ़ जी ज़रूरत इतनी ना है, because that is the waste of time according to me. Maybe that is the best strategy for you. तहां जे लाइ सुठी strategy थी सके थी, approach थी सके थी. Maybe तहां उन में वधिक expert हो जो. I'm not saying that is the wrong approach, ठीक है, but that is what, that is time taking approach. Okay, so move on. And first of all, so हिते first approach जेका आहे उहा आहे P first, then questions. This is the first approach that most of the learners and students they go for it. ठीक है? That is what, read the entire passage thoroughly first, and then read the questions. This is the strategy, this is the way out, how we go for this approach. ठीक है? Then skim through the passage. ताकि खबर है skimming छा होंगी या scanning छा होंगी, ठीक है? So skim through the passage and keep going back and forth with questions and passage. ठीक है? Skim scan कंदा वञो ऐं questions के भी ॾिसंदा वञो, passage भी पढ़ंदा वञो, ठीक है? With the passage of time you will get answers of your questions, ठीक है? Then read the first 2 paragraphs, scan all the questions, see what you can answer. पहिरियों पैराग्राफ पढ़ो, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, हाणे जेके आंसर्स तव्हां ॾिसंदा वेंदव न त उन्हनि में तव्हांखे ख़बर पइजंदी वेंदी त ही आंसर्स जेके आहिनि न उहे हिन पैराग्राफ में मौजूद आहिनि ऐं असां one by one reading that like in a way असां questions जा answer ॾींदा वेंदासीं, ठीक है? Then it says that then read paragraph 3 and 4, scan the questions and see what you can answer. This is the way to go for PQ approach, that is passage first then question, ठीक है? So this is the first approach. If you are like comfortable, if you think that this approach is suitable for you, तव्हां जे लाइ suitable आहे ये approach, तव्हां इन approach जे तहत जेको आहे सो जल्दी सां टेस्ट खे समझी भी सघो था ऐं उन खे solve भी करे सघो था, questions जा answers भी ॾेई सघो था, then go for it, ठीक है? Go for it. तव्हांजो comfort zone वधीक important आहे. What you think you can do, you will do, ठीक है? So this is very important. Then second approach says QP approach. Now first one was PQ, that is first passage and then questions, and then the second approach says कि तहां पहिरियां questions पढ़ो and then go for the passage, ठीक है? So it depends. हाणे इलाही माण्हू इलाही तकड़ा भी हूंदा आहिनि न, जल्दी जल्दी जंदा आहिनि questions खे असां पढ़ो, उन खां पोइ छा कयूं जो पैसेज मां उन जो जीअं मां तव्हांखे लास्ट टाइम टेस्ट में ॿुधायो हुयो त अगरि को लिंकिंग वर्ड अची थो वञे, को सिग्नल वर्ड अची थो वञे त उन सिग्नल वर्ड खे तव्हां पूरे पैसेज खे हिकदम सां स्कैन करे वञो पूरो ऐं उन खे फाइंड आउट कयो एंड देन रीड दैट लाइन और मे बी 2 लाइन्स, ठीक आहे? एंड देन यू विल गेट योर आंसर, ठीक आहे? सो दिस इज हाउ वी कैन डू. बट नाउ लुक एट दिस. इट सेज दैट read all questions with their answers, options first and then the passage, ठीक है? पहले questions पढ़ो, उन जा options पढ़ो and then go for the passage, ठीक है? Read question 1 with all the options, then go through the entire passage to answer it. हाणे इहो बि इलाही टाइम टेकिंग आहे. हिकु क्वेश्चन खे खणी अगरि असां पूरे एंटायर पैसेज खे पढ़ंदासीं त दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक आहे? सो यू हैव टू यूज सम ट्रिक्स while reading comprehension, ठीक आहे? उन जो पहिरियां तव्हां या त मेन आइडिया वठो पैसेज जो, ठीक आहे? then go for the questions and options, ठीक आहे? one by one उन खे स्कैन कंदा कंदा ऐं जेके लास्ट क्वेश्चंस आहिनि पूरा one by one तव्हां उन खे सॉल्व आउट करे वञो, ठीक आहे? then just read the question stem. हाणे स्टेम छा आहे? वरी चए थो जेको माना रूट आहे, स्टेम आहे, जेको क्वेश्चन आहे वो सिर्फ पढ़ो, उन जा ऑप्शंस न पढ़ो था, ठीक है? Without reading the answer options, then read the passage and try answering the question by reading them all options, ठीक है? चाहे तो questions पढ़ो पहिरियां, उन खां पोइ उन जो आंसर ॾिसो पैसेज में छा आहे, ठीक है? अगर मिली थो वञे पोइ उन जा ऑप्शंस ॾिसो था त पोइ तव्हांखे उनखे एलिमिनेट करण में आसानी थींदी त कहिड़ा कहिड़ा क्वेश्चन्स जेके ऑप्शंस आहिनि उहे ग़लति आहिनि, उन्हनि खे एलिमिनेट कयो, ठीक आहे? एंड देन गो फॉर द राइट आंसर. दिस इज वन मोर स्ट्रेटजी, ठीक आहे? ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एलिमिनेट एंड नॉट सिलेक्ट. इहा इलाही सुठी स्ट्रेटजी आहे. कुझु स्टूडेंट्स छा कंदा आहिनि, पहिरियां ई हिकदम सां ॾिसंदा ऐं राइट ऑप्शन जे लाइ हली वेंदा आहिनि, ठीक आहे? पहिरियां तव्हां उहे ऑप्शंस कढो जेके तव्हांखे लॻे थो त ग़लति आहे, ठीक आहे? जेके मैच नथा कनि.
फॉर एग्जांपल A B C D E मतलब D ताईं आहिनि ऑप्शंस, तव्हां सम्झो था त A जेको आहे ऑप्शन उहो नथो वञे, सही आहे। लाइक फॉर एग्जांपल तव्हांखे मां हिकु आर्टिकल जो एग्जांपल थी ॾियां, ही इज डैश engineer, ठीक है। हाणे article it means we are going to put a and the or x maybe, ठीक है। So x that I told you already, x is a zero article where we do not put any article। कुछ एड़ा हुंदा आहिनि जीअं sports जनाला थी विया, जीअं पाण abstract nouns जी ॻाल्हि कई, उते zero article वेंदो, उते को article न वेंदो, ठीक आहे। So he is dash engineer। हाणे 4 options तव्हांखे मिलियल आहिनि हिते। फर्स्ट ऑप्शन आहे A, then N, then the and then X, ठीक आहे। हाणे he is dash engineer। हाणे engineer ॾिसो त हिते the माना हिते स्पेसिफिक त ॻाल्हि थिए ई कोन पई का, ठीक आहे। the त पहिरियां ई असां एलिमिनेट करे छॾियो, कढी छॾियो असां। हाणे इंजीनियर हिकिड़ो आहे न, इट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वन, त इट मीन्स के अ या एन ईंदो, ठीकु आहे। एक्स बि न आयो, छो जो एक्स इंजीनियर जेको आहे एब्स्ट्रैक्ट न आहे, कंहिं स्पोर्ट्स जो नालो न आहे, कुझु ॿियूं बि शयूं इंक्लूडेड हूंदियूं आहिनि, उहो बि ईअं न आहे, ठीकु आहे। माण्हू आहे, प्रोफेशन आहे, त उनजे लाइ असां छा यूज़ कंदासीं, हाणे अ एन ॿ रहिजी विया असां वटि, एक्स एक्सक्लूड थी वियो, एलिमिनेट करे छॾियो असां, द एलिमिनेट करे छॾियो असां, ठीकु आहे। हाणे ॿ ऑप्शंस बचा असां वटि अ ऐं एन, ठीकु आहे। हाणे अ एन खे असां जॾहिं ॾिसंदासीं त असां चवंदासीं हाणे ही जेको इंजीनियर आहे इन जो साउंड जेको आहे उहो अ साउंड पियो अचे, ठीकु आहे, अ पियो अचे, त असां उन सां गॾु जेको अ आर्टिकल आहे उहो न ॾींदासीं, छो जो उहो कॉन्सोनेंट सां वेंदो आहे, ठीकु आहे। जॾहिं बि को अ साउंड अची थो वञे उन सां हमेशह एन ईंदो आहे, ठीकु आहे। सो असां छा कंदासीं, ए हाणे असां हिन मां डिलीट कयोसीं, एलिमिनेट कयोसीं, कट कयोसीं। हाणे असां अची वियासीं राइट ऑप्शन जे लाइ जेको आहे एन, he is an engineer, ठीक है। So this is how first eliminate the wrong answers and then go for the right one, ठीक है। ॿी हिकु important ॻाल्हि आहे हिते, त never apply your own knowledge or assumption when you have a specific reading comprehension, when you have a specific passage text in front of you, तव्हांजी जेका ॿाहिरी इंफॉर्मेशन आहे न, माना तव्हां मे बी कंहिं शइ जे बारे में पाण पढ़ियो हुजे ऐं तव्हांखे हुन जे बारे में कुझु ख़बर हुजे ऐं तव्हां उहा इंफॉर्मेशन विझी करे ऐं तव्हां उन आंसर जेको आहे सो ॾियो था उनजो, त दैट इज अगेन द रॉन्ग वन, ठीकु आहे। पैसेज जे हिसाब सां तव्हांखे आंसर्स ॾियणा आहिनि, whether that is making sense or not making sense, ठीकु आहे। सेंस ठाहे पियो न पियो ठाहे, पैसेज खे ॾिसी तव्हांखे उनजो जवाबु ॾियणो आहे। पंहिंजी ॿाहिरी इंफॉर्मेशन जेका आहे या जेका नॉलेज तव्हांखे पहिरियां खां आहे उहा तव्हांखे हुन में इंक्लूड कोन करणी आहे, उनजे हिसाब सां तव्हांखे आंसर्स कोन सिलेक्ट करणा आहिनि, ठीकु आहे। सो दिस इज व्हाट few of the approaches and how we can deal with the questions, ठीक है। this is what we can do with the reading comprehension, सही आहे। त इहो ॾाढो easy way आहे ऐं उनखे तव्हां प्रैक्टिस कंदा रहंदव त अञा तव्हांजी प्रैक्टिस थींदी त तव्हां लाइक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीकु आहे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिते त असां तव्हांखे कमु करायूं था, जेको कुझु ॾेखारियूं था, पर तव्हां पाण बि पैसेजेस कढो, उन्हनि मां क्वेश्चन्स ठाहिण जी कोशिशि कयो, उन्हनि जा ऑप्शन्स ठाहिण जी कोशिशि कयो एंड देन गो फॉर द आंसर्स। ऐं अगरि नेट ते अवेलेबल पैसेजेस आहिनि अलॉन्ग विद क्वेश्चन्स, ठीकु आहे, उन्हनि खे सॉल्व आउट करण जी कोशिशि कयो त तव्हांजो इंग्लिश जो जेको पार्ट हूंदो उहो आराम सां सॉल्व थींदो, ठीकु आहे। ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। हाणे ही जेको आहे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलाही सारा स्टूडेंट्स अहिड़ा आहिनि जेके चवनि था त असां वटि हार्ड कॉपीज़ उन्हनि खे सिंटेक्स बुक जा जेके बुक्स आहिनि उन्हनि जो, ठीकु आहे। सो इलाही खे इहो बि प्रॉब्लम आहे त असां वटि बुक्स ई अवेलेबल न आहिनि, त असां कीअं तयारी कयूं, ठीकु आहे। सो ज़रूरी कोन्हे को त तव्हांजे हथ में किताब हुजे तव्हां उनखे पढ़ो, अगरि उहो अवेलेबल कोन्हे, ॿाहिरां नथो मिले या को गवर्नमेंट स्कूल जा ॿार आहिनि उहे तव्हांखे नथा ॾियनि किताब या टीचर्स, त तव्हां छॾियो उन्हनि खे, ठीकु आहे। what you have to do, this is the link, go go for this link। हिन लिंक ते तव्हां वेंदव त तव्हांखे जेके बि सिंटेक्स बुक जा बुक्स आहिनि उहे तव्हांखे अवेलेबल PDF में आहिनि, ठीकु आहे। तव्हां उहे यूज़ करे सघो था, उहे पढ़ी सघो था, उन्हनि खे डाउनलोड करे सघो था, ठीकु आहे। हिकु दफ़ा डाउनलोड करे छॾियो सभई बुक्स, उन खां पोइ तव्हां वन बाय वन हिकु हिकु बुक खे रीड कंदा रहो, ठीकु आहे। वेदर इट्स इंग्लिश, वेदर इट्स सिंधी, वेदर साइंस, वट एवर द सब्जेक्ट इज, ही इलाही ईज़ी अथव, नोट करे छॾियो इहो, ठीकु आहे। त जीअं तव्हांखे आसानी थी वञे, पोइ कंहिंखां घुरण जी ज़रूरत न पवंदी, मोबाइल तव्हां सभिनी वटि आहे, उते हिन लिंक खे कंदा, उते ई तव्हां बुक डाउनलोड करे ऐं तव्हां पढ़णु शुरू करे छॾियो, ठीकु आहे। सो
this was very important. ठीक है, okay, now move on. हाणे अॼु पाण छा शुरू करण वारा आहियूं? अॼु पाण शुरू कंदासीं My English Book 3. Now syntax book जो ही बुक आहे जेको असां अॼु फॉलो कंदासीं, हिन में जेके जेके शयूं आहिनि उहे मां तव्हांखे पढ़ाईंदमि, ठीकु आहे। फुल बुक मां अॼु न पढ़ाए सघंदमि, ज़ाहिर आहे, we'll continue this tomorrow as well. ॿ कॉम्प्रिहेंशन मां अॼु खया आहिनि हिन बुक मां, उन्हनि ते डिस्कस कंदासीं, ऐं whatever the language practice they have given, जेके भी language practice इन्हनि ॾिनी आहे उन्हनि खे थोरो थोरो मां हिकु तव्हांखे overview ॾेई छॾींदमि, ठीकु आहे। So let's move on. Book 3, we are going to start it. हाणे हिते ॾिसो हिन जो कंटेंट आहे, ठीकु आहे। फर्स्ट यूनिट जेको आहे उन में ॾिसो त 1.1 says oral communication, introduce yourself and others, ठीकु आहे। Then second number it says reading comprehension, and introduce yourself and others, that is something a general activity या communication जे लाइ हूंदी आहे, ठीकु आहे। When we talk about oral communication, verbal communication जी ॻाल्हि कयूं, उन वक़्तु असां ये एक्टिविटीज करे सघूं था या ये असांजे लाइ इंपॉर्टेंट आहिनि। बट नाउ असांजो ऑब्जेक्टिव छा आहे? असांजो ऑब्जेक्टिव आहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन along with language practice, ठीक है। लैंग्वेज प्रैक्टिस के भी थोड़ा थोड़ा ॾिसंदा हलंदासीं त असांजे लाइ आसानी थी वेंदी। ओके, नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन द ट्रेजर, अॼु मां इहो हिकु खयो आहे द ट्रेजर, ठीकु आहे। उन सां गॾु जेके लैंग्वेज आहिनि प्रैक्टिसिस, अपॉस्ट्रॉफी जे बारे में थोरो तव्हांखे ॿुधाईंदमि, प्रोनाउंस एंड पॉसेसिव प्रोनाउंस जे बारे में ॿुधाईंदमि, ठीकु आहे। राइटिंग असांजो ऑब्जेक्टिव न आहे, सो आई लेफ्ट इट, ठीकु आहे। First 1.1 and 1.4 I have left it because we are not like concerned with these two parts. So number 2 unit जेको आहे उन में oral communication and inquiring about health. Number 2 reading comprehension जेको आहे उहो आहे healthy eating habits part 1, ठीक है। So language and practice केड़ी थी अची वने, imperative sentences अची वञनि था, हाकमिया जेके चवंदा आहियूं न असां, हुकमिया sentences, ordering वारा उहे आहिनि। उन खां पोइ राइटिंग में पैराग्राफ अची वियो, ठीकु आहे। सो हिते सिर्फ़ु तव्हां ॾिसी वठो त कहिड़ा कहिड़ा आहिनि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेफ्टी मेजर्स आहे 3 यूनिट में। उन खां पोइ वरी डिग्रीज जे बारे में, राइटिंग डिग्रीज आहिनि, लैंग्वेज प्रैक्टिसिस आहिनि, ठीकु आहे। ओके, यूनिट 4 ॾिसो पाकिस्तानी फेस्टिवल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ़ु ॾिसंदा वञो। यूनिट 5 में राशिद मिन्ना शहीद आहे, उन खां पोइ 6 में आहे मंथ्स ऑफ ईयर, ठीकु आहे। सो दिस इज हाउ we like this is how we are going to do. अॼु मां यूनिट 1 ऐं यूनिट 2 जो तव्हांजो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ॾिठो आहे उन ते पाण अॼु ॻाल्हाईंदासीं। then tomorrow I'll take 2 more and then we'll discuss more, ठीकु आहे। okay, so look at the reading comprehension first. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ॾिसो हिते द ट्रेजर आहे। हाणे छा कयो, जल्दी सां या त तव्हां पिक्चर क्लिक करे वठो हिनजी हिकिड़ी, ठीकु आहे। पिक्चर क्लिक कयो या तव्हां जल्दी सां हिनखे पढ़ो, मां फौरन सां हिनखे रिमूव न कंदमि, पहिरियां पढ़ां थी तव्हांजे लाइ, ठीकु आहे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छा आहे असांजो, द ट्रेजर। हाणे इट्स अबाउट अ फार्मर and his 5 sons. It says a farmer had 5 sons. He worked on his fields alone. पढ़ंदा वञो, ज़हन में ॾियारींदा वञो त कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं आहिनि जो पोइ क्वेश्चन्स वेंदा। He sent his sons to school and gave them everything they needed. They became strong young men, but they were lazy and selfish. They fought with one another all the time. When the farmer grew old, he became worried. He wanted his sons to work and love one another. One day he called his sons and said, I'm very old. I cannot work anymore. There is no money for food. Now you have to work. Thika? This is the first part. Farmer just son पंज ॿार पुट हुया, वो जेको आहे सो ॾाढो महिनत कंदो हुयो फील्ड्स में वञी करे, पंहिंजे ॿारनि खे स्कूल बि मोकिलींदो हुयो, उन्हनि जी हर ज़रूरत पूरी कई, everything they needed he gave them. They become strong young men, strong ऐं like young men ठही विया, हू माना भाई ठही विया, but they were lazy and selfish and lazy भी हुया। If they were strong and young, but at the same time they were lazy and selfish. They fought one another. हर टाइम हिक ॿिए सां विढ़ंदा रहंदा हुया। When the farmer grew old, जॾहिं फार्मर पोड़ो थी वियो, he became worried, हू इलाही परेशान थी वियो। He wanted his son to work and love one another. हू इहा ख्वाहिश हुई त मुंहिंजा ॿार जेके आहिनि, मुंहिंजा पुट जेके आहिनि, उहे कमु कनि ऐं हिक ॿिए सां इलाही प्यार कनि। One day he called his sons and said, हिकु ॾींहुं हुन पंहिंजे पुटनि खे घुरायो ऐं चयो त आउं इलाही पोड़ो थी वियो आहियां, हाणे आउं वधीक कमु नथो करे सघां, मूं वटि वधीक पैसा बि कोन्हनि जो तव्हांखे कुझु हाणे खाराए सघां। I don't have money for food. Now you have to work. तव्हांखे हाणे कमु करणो पवंदो, ठीकु आहे। So
Look at this now. His sons were angry. Like kawad में अची विया लिया. No one wanted to work. केर भी कम ज़ाहिर असां के वेठा हूंदा सी न वेही खाइण लाइ हर शइ मिलंदी त कंहिंजो बि दिलि कोन चवंदो त उथी कम कयूं. So हाणे जॾहिं उन्हनि खे हर शइ मिली पे उन्हनि जे पीउ माना फील्ड्स में कम कयो पे त उन्हनि खे त ज़रूरत न हुई कम जी. But when he said I'm old now and I no more I cannot work, so you guys have to go and work. So they were very angry. No one wanted to work. They started shouting and fighting. Fighting shuru kare chadyan. The old farmer said, "Stop fighting. I will tell you a secret." ठीक है. So the old farmer said, "उन्हें चाहिए तो मना fighting बंद करे चलो एक secret मत आके बताया तो there is gold in the field. Field में चाहे जमीन में gold thava, son thava. Go and find it." The boys dug up the field, but there was no gold. खोदींदा रहा जेको ऐसे जमीन के field के पर के को सोन वगैरह कौन मिलियो. They were tired and upset. उलाई थकी पिया ॾाढा उदास थी विया. The farmer said, saw some seeds in the field. हाणे या ट्रिक हुई उन जे पीअन जी उन्हनि खे सम्झाइण जी त उन्हनि पहिरियां चयो त गोल्ड थव पहिरियां हिन खे डग कयो. ठीकु आहे. हिन खे तव्हां जॾहिं खुदाई कंदव त तव्हां गोल्ड मिलंदो. nobody got it. ठीकु आहे. उन खां चई हाणे हिन खे माना saw some seed हिन में सभु सीड्स जेके आहिनि उहे तव्हां हिन में विझो त पोइ very soon you will have your gold. माना पोइ तव्हांखे पंहिंजो गोल्ड मिली वेंदो. The young men were very sorry. They sowed the seeds and had a good crop. ठीक है. उनके like जेको आहे उनजी फसल ॾाढी सुठी थी. They sold it in the market for a good price. As a result, they decided to work hard and not to fight with one another. So that was the farmer's trick. He encouraged his sons to work in the field. ठीक है. So this is the comprehension. हाणे अॻियां छा आहे? Reading comprehension तव्हांखे समझ में अची वियो. Very easy. It's very easy. या स्टोरी असां पढ़ी बि चुका आहियूं. Farmer ji ऐं उन जे पुटनि जी. ठीकु आहे. So no need to drag it or exaggerate it. So let's move on to the exercises. Okay. So Suresh chahe to very best story for lazy people. Exactly. जेके lazy हूंदा आहिनि न उन्हनि जे लाइ इहा story ॾाढी सुठी आहे. Okay. So while reading activity 1 आहे. There are 6 people in the story. Who are they? जल्दी सां मूंखे नाला ॿुधायो. केर आहिनि 6 माण्हू जिन जे बारे में असां ॻाल्हायो या जिन जे बारे में असां पढ़ियो स्टोरी में. केर हुया? Hurry up guys. I'm waiting for your answers. जल्दी सां मूंखे ॿुधायो 6 माण्हू केर हुया? Okay. So still no answer. Okay. So there are 6 people in the story. Who are they? One. Okay. So Muhammad Aslam jawab dino ahe. 1 is farmer and 5 sons of farmer. Good. Babar Chaito farmer and his 5 sons. Okay, let's move on. Good guys. So number 2, B says take the words that describe farmer. हाणे केड़ा words आहिन जेके farmer खे describe कन था. Farmer lazy हो, young हो, hard working हो या old हो. जल्दी सां ॿुधायो केड़ा words आहिन जेके farmer खे describe कन था. Okay. So Sikandar bhi budhayo ahe. Farmer and his sons. Sarang. Okay, good. Your answer is right. Akhtar Chaito 1 father 5 sons. Okay. Muhammad Tayyab. Right answer. Mukesh right. Ali Dino right. Okay. Saira Chaithi farmer and 5 son. Okay. Saira again. Saira ha. Okay. Hane Nasibullah Chaito the hardworking and old. Okay. Good. Saira again Chaithi hardworking old. Muhammad Aslam Chaito hardworking old farmer and hardworking. Okay. Old hardworking. Akhtar Mansoor bhi budhaye tho. Prince Asif Chaito old and hardworking. Kaleem hardworking. Okay. Prince Raz old and hardworking. Thika Muhammad Tayyab. Hadi ahe. Bakhrani Hadi. Sorry if I'm taking your name wrong. Thika jo answer bhi sahi ahe. Okay. So let's move on. So old and hardworking. Exactly. That is the right answer, guys. Thank you so much for your participation. Let's move on. So 6 people care hoya. Farmer hoyo and his 5 sons. Then farmer ke keda words describe kan tha. Old and hardworking. Thika. Let's move on.
Okay, now cross the words that do not describe the farmer's son. जेके describe नथा कन farmers जे son के son जेके हुया उन्हनि खे उन्हनि ते टिक कयो माना फार्मर जो जेको असां पहिरियां ॾिसो कयो उन में हुयो त जेको फार्मर खे डिस्क्राइब कनि था ओल्ड ऐं हार्ड वर्किंग हो ठीकु आहे हाणे हिते जेके नथा कनि उहे टिक कयो जेके नथा कनि उहे टिक कयो ओके उमर चए थो old अच्छा old and hard working that was the old one now this is the new one C cross the words that do not describe the farmer's son ठीक है hardworking and old yes they were selfish they were young they were lazy but at the same time their father was hardworking and old they were young they were lazy and they were selfish it happens these days है ना ॾिसंदा आहियूं जॾहिं असां असांजा माउ पीउ एॾी महिनत कंदा आहिनि असांखे पढ़ाइण जे लाइ असांजे लाइ हर जेका बि असांजी ज़रूरत हूंदी आहे पूरी करण जे लाइ बट वी गाइस द न्यू जनरेशन इज़ वेरी सेल्फिश ठीकु आहे इलाही लेज़ी आहियूं बसि पंहिंजो मोबाइल खपे पंहिंजी मानी जी प्लेट खपे एंड वी जस्ट वांट आवर बेड जिते असां सुम्ही सघूं ऐं सॼो ॾींहुं बसि बेड सां गॾु चार्जर बि लॻल हुजे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस इज़ हाउ द ओल्ड स्टोरीज़ जेके आहिनि उहे बि लिंक कंदियूं अचनि थियूं रियल सिचुएशन ते ठीकु आहे सो लाशारी चए थो ओल्ड एंड हार्ड वर्किंग परवेज़ अच्छा हार्ड वर्किंग जावेद उनर ठीकु आहे अनाबिया ओके फैज़ मोहम्मद मुकेश मोहम्मद तैयब तव्हां छा चयो मूंखे सम्झ में न आयो अच्छा सो लेट्स मूव ऑन शायद मुझे तव्हांखे ॻाल्हि न वणी ओल्ड लेज़ी हर शइ में माना हर केस हिकु जहिड़ो न आहे हूंदो ठीकु आहे हिते असां बि जेके आहिनि से ॿार ॾिठा आहिनि जेके पूरियूं जेके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आहिनि पंहिंजे पेरेंट्स जूं खणंदा आहिनि इलाही हार्ड वर्किंग हूंदा आहिनि इलाही माना क़ाबिल ॿार हूंदा आहिनि सो वी ऑल शुड गो फॉर द राइट चवंदा आहियूं त सुठियूं आदतूं अपनायूं ऐं के अहिड़ियूं सोसाइटी में कंध खणी पंहिंजो हिकिड़ो पंहिंजी जॻह ठाहिण जे लाइ असांखे वधी सघूं त उहे आदतूं अपनायूं ओके नाउ लुक एट दिस मैच द वर्ड्स इन कॉलम A with their meanings in column B हाणे ही छा आहे ही synonyms अची विया हाणे जेके जेके मीनिंग्स आहिनि उहे जल्दी सां मूंखे ॿुधायो हार्ड वर्किंग someone who works hard पहिरियों तव्हांजे लाइ कढियो अथनि हाणे selfish what is the meaning of selfish lazy what is the meaning of lazy saw ताके बुधायो मां saw what is the meaning of it secret good prize treasure हाने दी सामू के बुधायो नंजू okay one this thing is nowadays TikTok अच्छा इश्यूज ते भी गलाइंदासी गलाइण में अंदासी तब चना है ना the बात से फिर बात निकलती है so this is about the synonym okay so Muhammad Aslam said lazy those do not like to work okay हाने हिन में बुधाना do not like to work okay अख्तर चए थो charger is important these days yeah it is okay Saira lazy those who do not work okay Babar lazy means those who do not work selfish caring about oneself right good Naseebullah chahe to selfish means caring about oneself Mansoor chahe to caring about oneself okay Ali Dino chahe to selfish caring about oneself Muhammad Aslam chahe to saw put seeds in the ground very good okay Babar treasure lots of money treasure means lots of money okay Javed chahe to selfish those who do not like to work Roshni lazy those who do not like to work selfish caring about oneself treasure selfish khudgars matlabi शहबाज है तो खुदगर्ज है मतलब भी हुए जेके सेल्फिश है ठीक है ओके आसिया ट्रेजर लॉट्स ऑफ मनी सेल्फिश ठीक है उन खां पोइ अली डिनो ठीक है लेजी दोज हू डू नॉट लाइक टू वर्क सीक्रेट समथिंग यू डोंट टेल एवरीबडी ओके मोहम्मद असलम चए तो सीक्रेट वो आहे दैट यू डू नॉट टेल एवरीबडी गुड Then good prize, lots of money. Good prize is lots of money. Treasure thindo, lots of money to mukhe lage to. Good prize. What does it mean? Guys, jaldi batayo mukhe. अच्छा, treasure जेको आहे वो lots of money न थींदव. treasure थींदो money gold etc ठीक है बाबर तांजी या गलती हुई थे हाने मुके के यो बुधायो lots of money treasure lots of money
No, treasure means money, gold, etc. Ilai sari money, good price. Good price means ilai sari money, lots of money. I have a good amount. I have good price. I have good money. ठीक है? So that is ठीक है, selfish. Money. Okay, let's go for the answers, guys. So hard working, जब इच्छा है, selfish जी अच्छी वही आहे the meaning मां तव्हांखे ॿुधायां थी. Okay, caring about oneself, lazy. Selfish आहे caring about oneself. ठीक है? जॾहिं असां पंहिंजे बारे में सोचूं, that is selfish. Lazy, something you don't. अच्छा, that is not. Those who do not like to work. Those who do not like to work, that is lazy. Saw, put seeds in the ground, secret, something you don't tell everybody, ठीक है? Then good price, lots of money, treasure, that is money, gold, etc. ठीक है? समझियो? So this is how. Mukesh, okay, sabni jawab dina hai, ठीक है? Thank you very much, guys. Okay, let's move on. हाणे ये synonyms हुया, तांखे खबर पइजी वई त कीअं असां इन्हनि मां कढंदासीं मीनिंग्स जेके आहिनि. हाणे अॼु असां 3 यूज़ कई आहे त उहो बिल्कुलु ईज़ी हुयो, ॿाराणो आहे त सम्झी वियासीं, उहो आराम सां थी वियो. ओके, नाउ टेक्स्ट ए, कंप्लीट द सेंटेंसेस इन टेक्स्ट ए बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस फ्रॉम टेक्स्ट बी, कॉलम बी. ठीक आहे? हाणे कॉलम ए ऐं कॉलम बी आहे. छा तव्हांखे करणो आहे? नंबर 1 फॉर एग्जांपल, इफ नंबर 1 गोज विथ बी सी डी त तव्हां छा करणो आहे? नंबर 1 उन सां गॾु अल्फाबेट ॾियणो आहे जेको राइट ऑप्शन आहे हुनजो. ठीक आहे? द फार्मर वर्कड अलोन इन द फील्ड बिकॉज़ there was gold in the field. They had a good crop which they sold for a good price. Saw some seeds in the field. He wanted his son to go to school. They did not want to work. And when he told his sons to work, they became angry because they had there was gold in the field. They had good crop which they sold for a good price. Saw some seeds in the field. He wanted his sons to go to school. They did not want to work. Okay, now tell me, इन्हनि खे असां कॉलम ए ऐं बी जे जेके सेंटेंसेस आहिनि, कहिड़ो सेंटेंस कहिड़े सेंटेंस सां वेंदो उनखे कंप्लीट करणो आहे तव्हांखे. कॉलम ए में जेके आहिनि उहे सेंटेंसेस कंप्लीट कोन्हनि के. जॾहिं असां कॉलम बी जेके सेंटेंस खे उन सां जॉइन कंदासीं, मिलाईंदासीं त उहो हिकु सेंटेंस ठही वेंदो, उनजो प्रॉपर सेंस निकिरी ईंदो. ठीकु आहे? सो फॉर एग्जांपल, नंबर 1, द फार्मर वर्कड अलोन इन द फील्ड बिकॉज़ ही वांटेड हिज सन्स टू go to school. हाणे A1 will go with D, 1D. ठीकु आहे? 1 जॾहिं असां पढ़ूं था त उनजो ऑप्शन छा आहे? D आहे. उन सां मिलाईंदासीं त प्रॉपर सेंस थी वियो. फॉर एग्जांपल, when he told his sons to work, they became angry because छो angry थी विया? Okay, answers अची विया आहिनि. नसीबुल्ला चए थो 1 is D. Okay, good. सिकंदर 1 is D. 2 is E. When he told his sons to work, they became angry because they did not want to work. Very good. Okay, Saira Chaiti 1 is D. Suresh Chaito 1 is D. Okay, 1 is D. Ali Dino, Javed 1 is D. 1 is D. 3 is A. 3 is A. Okay, Keto Chayo, Nasibullah Chaito 3 is A. Now, the farmer told his sons to dig the field because A, there was gold in the field. Trick koi na hona ji budhayana ji. The जेको उन में थव गोल्ड थव, सो उनखे जेको आहे सो तव्हां डिग कयो, उन मां कढो, फील्ड के डिग कयो, तव्हां गोल्ड मिलंदो उन मां. वेरी गुड. ओके, ज़ोहेब चए थो डी. ओके, तैयब 1 is D. अली डिनो 2 E. 4 नसीबुल्ला इलाही स्ट्रॉन्ग आंसर्स तो ॾे पियो, सॼा ॿुधाए छॾिया अथसि. ओके, 4 is C. Now 4 is C. After they had dug the field, the farmer told them to saw some seeds in the field. Very good. Okay, D. Sophia, Tika, A, Babar Jato, A, 1 is A. Okay, 1 is A. No, you have only written A, Babar. I don't know which option you are talking about. Javed, okay, Nasibullah, 5D. 5 jaka wo D hai. The sons decided to work hard as you're wrong thi vyo taanjo Nasibullah. Because we have already used D. जॾहिं A जो D थी वियो त वरी D सां उन में यूज़ नथा करे सघूं. We have only one option left, that is B.
the sons decided to work hard as they had a good crop which they sold for a good price. ठीक है? So this is how it's done. ठीक है? The farmer worked alone in the field because number 1, D, he wanted his sons to go to school. ठीक है? Number 2, when he told his sons to work, they became angry because E, they did not want to work. ठीक है? 1, D, 2, E, 3 जो क्या है, the farmer told his sons to dig the field because A, अने 3 जो A था, there was gold in the field. ठीक है? 4, after they had dug the field, the farmer told them to what? Saw some seeds in the field. C, and 4 जो C थी वो, and 5 जो B थी वो. So that is how we go for the right answers and complete sentences. ठीक है? Okay. Now that was the first comprehension जेको असां पढ़ी छॾियासीं. That was the treasure. ठीक है? Treasure पढ़ी छॾियोसीं. हाणे असां अची विया आहियूं second comprehension ते, जेको आहे healthy eating habits. ठीक है? You will be like easy to have healthy eating habits. These days we people do not eat healthy, we eat a lot of junk food. ठीक है? So this is how at the very age very we can say young age, class 3 जे ॿारनि खे इहो पढ़ायो थो वञे healthy eating सां तव्हांखे कहिड़ा कहिड़ा फ़ाइदा मिली सघनि था. ठीक है? So this is how they have given such kind of comprehension in book, and that is very nice. ठीक है? So reading comprehension, हाणे छा थो चए, by the end of this section the students will be able to use pre-reading strategies to predict some words that might occur in text by looking at the picture title. पहिरियां जेके आहिनि स्ट्रेटेजी कहिड़ी आहे, प्री रीडिंग आहे, जंहिंमें हिकु पिक्चर ॾिनल आहे, जंहिं ते ॾिसी करे ॿार जेके आहिनि छा करे सघंदा, कुछ words जेके आहिनि, some word that might occur in the text by looking at picture title. ठीक है? पिक्चर जो टाइटल ॾिसी करे ॿार कुछ words ॿुधाईंदा त कहिड़ा कहिड़ा इन लेसन में अची सघनि था. Locate specific factual information to answer short questions based off the text. ठीक है? Use context and info meaning अची वई, उन में answers questions जा अची विया, कुछ linking words, signal words अची विया. ठीक है? missing words अची विया, gap कीअं उन्हनि खे fill करणो आहे. ठीक है? relate what is read to their own experience. ठीक है? So this is how everything is managed, everything is given. Okay. Now reading comprehension, जल्दी से आने के पढ़ो. Healthy eating habits. Okay, healthy eating habits. Now look at this. Farah and Salma are good friends. They go to the same school. They are classmates too. Salma is strong and healthy. She likes fresh fruits and vegetables. Her mother cooks simple and tasty food. She loves her mother's cooking. Farah is not strong. Now, first of all, they talked about Salma, that she is strong and healthy. She likes fresh fruits and vegetables. Her mother cooks simple and tasty food. She loves her mother's cooking. ठीक है? हाणे हिते कुछ words भी ॾिसंदा हलो, कहिड़ी शयूं यूज़ थियल आहिनि. ठीक आहे? हाणे on the other hand, Farah is not strong. She is weak and thin. She does not eat simple food. She likes burgers and spicy food. At school, she eats spicy snacks and sweets. Farah and Salma sometimes share their food. Now, again, it's continue. One day, Farah ate a spicy burger kebab in the break. She also had a glass of, I guess that is, I don't know what's that. A glass of maybe something, and an ice cream and an ice candy. She bought those things from outside the school gate. Soon she fell sick. हाणे ॿाहिरां वठी आई हुई स्कूल जे. ठीक आहे? ऐं उतां खाधई कुझु. ठीक आहे? त छा थी वई, बीमार थी वई. Next day, Farah did not go to school. She had a stomach ache and fever. उनखे ॾाढो सूर थियण लॻो stomach में, and like she had fever. Her father took her to the doctor. The doctor gave her medicine. The doctor said to her, take rest, drink lots of water, no spicy food. Mana mirchan waro khado na kha, pani pee lai saro ऐं आराम कर. In the evening, Salma and her mother came to see Farah. Farah said, I will never eat food sold outside school gate. The doctor said that open food has germs. जेके open खुलियल food हुंदो आहे,
उनके उनमें जर्म्स होता है लाइक इफ यू वांट अच्छा दैट इज कोल्ड ड्रिंक प्रिंस फराज चए तो कोल्ड ड्रिंक ठीक है मूंखे नज़र में वर्ड ना आयो ना उता तंहिंजे करे मां पढ़ी न सघियमि तव्हांजे लाइ ओके थैंक यू प्रिंस फराज in the evening Salma and her mother came to see Farah. Farah said, I will never eat food sold outside the school gate. The doctor said that open food has germs. If we want to be healthy, we must eat healthy food. Okay, so this was all about the text. Now let's move on. Read the story and take the correct statements. jaldi se batao kedi correct hai, kedi galat hai. Farah and Salma are in the same school. Is it right? Wrong. Salma is weak and thin. Salma sandri hai and kamzor hai. Farah likes fresh fruits. Farah ke fresh fruits padanda hain. Farah does not eat simple fruit. Farah जेका आहे उहा simple food ना है खाईंदी. Sometimes they share their food. कॾहिं कॾहिं पंहिंजो food share कंदियूं आहिनि. हाणे जेको सही आहे न त जल्दी सां टिक करे मूंखे ॿुधायो. Nasibullah चए थो माजिद चए थो true. Okay, true. Farah and Salma are in the same school. That's true. Nasibullah चए थो right. Mohammed Aslam चए थो right. Akhtar चए थो right. Okay. Number 2 wrong. Akhtar no. Okay. Salma is not weak and thin. Okay, so first one is right, second one is wrong, then third one no. Farah likes fresh fruit. Na Farah ke fresh fruits na banana hoya, Salma ke banana hoya. That's wrong. Very good. Okay, Mohammed Aslam chahe to third is right. Third right kiya tho? Farah ke na banana na she used to eat burgers and spicy food. Fresh fruits na ke na banana hoya. ठीक है उनका po wrong. ठीक है हाणे चाहे रोशनी अच्छा रोशनी चाहे थी right wrong ठीक है number 2 is wrong Javed Akhtar chahe tho 4 is no. Farah does not eat simple food. It's no. Farah does not eat simple food. वो simple food ना है खाइंदी spicy खाइंदी है ठीक है so that is what Farah does not eat spicy food simple food कौन खाइंदी है so that's right करे करे ये भी थींदो आहे त नेगेटिव में अची वेंदियूं आहिनि स्टेटमेंट्स पोइ असांखे सम्झणो पवंदो आहे त वाकई ही नेगेटिव में जो क्वेश्चनियर्स अक्सर हूंदा आहिनि न जंहिंमें नेगेटिव ऐं पॉजिटिव ॿई आइटम्स हूंदा आहिनि त उनमें असांखे ख़बर कोन पवंदी आहे किथे किथे असां पकड़जी पवंदा आहियूं जॾहिं असां कूड़ो वूड़ हणी करे कुझु आंसर्स ॾियण जी कोशिशि कंदा आहियूं न पोइ उते असांखे ख़बर पइजी वेंदी आहे त किथे किथे नेगेटिव में बि माण्हू सही खे हणी छॾींदो आहे ओके 5 is right sometimes they share their food okay Mohammed Aslam chahe to right very good okay so number 1 Farah and Salma are in the same school. Right. Salma is weak and thin. Wrong. Farah likes fresh fruits. Wrong. Farah does not eat simple food. Right. Sometimes they share their food. Right. Okay. So that was all about this exercise. Let's move on. Very hane synonyms achi vaya thava. Hane jaldi sa budhayo. Kedo word kede sa mindo? Snack. A small meal eaten in a hurry. Jaldi sa bahira wati kare ke shayun khai chadida ayu na. Ready made jeको milanda ahin. Snack that is a small meal and a tasty spicy simple food stomach ache what is it jaldi sa match kyo hi budhayo jaldi sa budhayo hane synonyms budhayo tasty jo cha hai having lots of salt and chilies having a good taste not having too many spices a pain in the stomach spicy cha hai okay so Mir Hassan chahe to assalamu alaikum to all ta hane jage ayo asani class khatam thiyan wari hai okay Nasibullah chahe to tasty having a good taste okay very good then Majid tasty having a good taste 2 is B ite to 2 B aahi na acha Roshni chahe thi tasty having a good taste Kaswa spicy having a lots of having Nasibullah chahe to spicy having lots of salt and chilies good Faiz Mohammed Jaito tasty having good taste okay Murad having a good taste okay spicy having lots of salt and chilies Mohammed Aslam okay good Shahbaz 3A Akhtar tasty having good taste spicy jaldi jaldi मूंखे ॿिया बि ॿुधाईंदा वञो न simple food छा आहे stomach ache छा आहे जल्दी सां इहो बि ॿुधायो simple food not having too many spices Nasibullah ॿुधाए छॾियो आहे ठीकु आहे spicy having lots of Roshni chahi salt and chilies theek hai Mohammed Aslam simple food not having too many spices good stomach and Nasibullah budhaye to chaitota is a pain in the stomach okay good Akhtar chaito spicy having chilies theek hai Prince Faraz tasty theek hai Muzammil tasty having good taste
Okay, Mir Hassan Solangi. Mir Hassan Solangi चलो sorry जी गाल काने ता repeat में सी वठजो खैर ना कोई नी सख्त कोने को जो ताके वही क्लास वठणी है टाइम ते no problem. Okay, so let's move on guys. Thank you very much for your responses. हाणे ॾिसो tasty chai having a good taste, okay. Spicy, having lots of salt and chilies. Then simple food, not having too many spices. Stomach ache, that is a pain in the stomach. ठीक है? So let's move on. Hane, each I fill the blanks with given below by taking clues from the text you read on the previous page to complete the sentences. Hane, jaldi se I complete your sentences. Farah and Salma are dash friends. Keda friends hain? Salma is strong and dash what? Farah is dash and thin. Salma loves food dash by her mother. Farah loves to eat dash. Jaldi sa इनके fill क्यों आने? जल्दी सा. Okay, आने मुझे जल्दी ना आंसर्स जो टेक्स्ट में दिसी करे. तपो अगला हलाऊं पान लैंग्वेज जी थोड़ी एक्सरसाइज ताके कराया and then I'll finish the class today. ठीक है? Okay. A is good. Mohammed Aslam Chaito, Farah and Salma are good friends. Okay, very good. They are good friends or best friends? What is it? Good friend or your best friend or your? They are good friends, I guess. Yeah. Salma is strong. Okay, Faizan Ali Chaito, Salma is strong and what? And what? And B is healthy. Salma is strong and healthy. Okay. Thika. Then A में good थो अची वने ठीका. हसन बुधाए थो तैयब भी बुधायो है best friend healthy ठीका. रोशनी चए थी good and healthy ठीका. हाने मुके first में अची वियो good they are good friends. Salma is strong and healthy. हाने Farah is dash and thin. What's that? She is what? छा है Salma जो बुधायो मुके जल्दी सा. अच्छा नसीबुल्ला पूरा आंसर ॾेई छॾिया आहिनि. चए तो best thick थिक त न थींदी न. थिक कीअं थींदी बाबा? स्ट्रॉन्ग एंड थिक छोकरी एडी थिक वरी कीअं थी वई? न वीक. फरा इज वीक एंड थिन. इहो सही है तव्हांजो आंसर. ठीक है. सलमा लव्स फूड मेड बाय हर मदर. ठीक है. फरा लव्स टू ईट आउटसाइड. ठीक है. Healthy. B. Farah is not strong. She is not strong, but what is the specific word that was used in the passage? केड़ो यूज चलो यो? She is weak. माजिद चहे तो weak. ठीक है. Good. E. Spicy. Farah loves to eat spicy food. Weak. ठीक है. Okay. Faiz Mohammed चहे तो weak है. ठीक है. Okay. So let's move on. दिसाऊं ताने छा है? Farah and Salma are good friends. ठीक है. That is the right one. Salma is strong and healthy. That is the right one. Farah is weak and thin. That is the right one. Salma loves food made by her mother. That's right. Farah loves to eat spicy food. Tika, she loves spicy food. Very good. Hafiza Baloch बताए छॾियो आहे. E is a spicy food. Saira भी चए थी E is a spicy food. ठीक आहे. Cooking नथी उनखे वणे. ॿार आहे कुक कीअं कंदी वीचारी. ठीक आहे. So spicy food is the last one. ठीक आहे. Let's move on. हाणे pre activity छा आहे? Answer the following question. What did Farah eat on that day? ठीक है. Farah ate a spicy bun kebab. ठीक है. So look at this. What happened to Farah? Farah की छा थी वियो हुयो? Farah fell. What? Missing words आईंदी है. ठीक है. Number 2. Why did Farah not go to school? Farah had what? ताहियर ये synonyms में पढ़ायो है ना कि छा हुयो? Okay, whenever you match my comment, only say okay. मुज़म्मिल छा चवां पोइ तव्हांखे? चवां थी सही आहे, सुठी ॻाल्हि आहे. ओके ठीकु आहे. हाणे ॿियो कुझु यूज़ कंदमि. ओके न यूज़ कंदमि. ठीकु आहे. ओके सो अच्छा नो ओके फाइन. मीर हसन सोलंकी चए थो सिक. गुड. हफीजा चए थी सिक. मुजम्मिल सिक. ठीक. अख्तर चए थो फीवर. नंबर 2 में फीवर हुयसि ऐं फीवर सां गॾु ॿियो छा हुयसि? फैजान नॉट फील वेल. शी वाज नॉट वेल. Farah fell sick. She fell sick. ठीक है. Why did Farah not go to school? Farah had stomach ache and fever. She had stomach ache and fever. What did the doctor give her? Doctor ने क्या दिनी? The doctor gave क्या दिनस? Doctor क्या दिनस? जल्दी बुधायो.
Okay, Muzammil said Farah had fever because she had stomach problem, stomach ache थिंदो जो word use थियल हुयो उहो ई word use करणो आहे तॾहिं मां तव्हांखे चांदी त पंहिंजी इंफॉर्मेशन न विझो जेको मां तव्हांखे पहिरियां ई ॿुधायो आहे ठीकु आहे Okay, take rest and drink water. Nasibullah chahe to the doctor gave her what doctor gave her? Doctor gave her medicine and he said take rest, drink water and don't eat spicy food. सही है ना ठीक है मेडिसिन भी नहीं सुन के हाँ मेडिसिन नहीं सुन सकते एडवाइस भी नहीं ना एडवाइस भी नहीं ना डॉक्टर गेव हर एडवाइस तो भाई पानी लाई पी जाई स्पाइसी फूड न खाई जाई ऐं रेस्ट करे रही ठीक है ओके लेट्स मूव ऑन हाने ठीक है लेट्स स्किप इट वही एक्सरसाइजेस आहिनि फिल आउट करण जे लाइ हिते ॾिसी वठो तव्हां अगर क्लास खां पोइ तव्हांखे करणियूं आहिनि त तव्हां करे छॾिजो इहे ठीकु आहे बट लेट्स मूव ऑन टू द लैंग्वेज प्रैक्टिस नाउ ओके सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आर कंप्लीटेड ठीकु आहे लेट्स मूव टू द लैंग्वेज प्रैक्टिस जेके हिननि ॿिनि यूज़ यूनिट्स में तव्हांखे लैंग्वेज प्रैक्टिस ॾिनल उन ते थोरो ॻाल्हायूं था ठीकु आहे फर्स्ट वन अपॉस्ट्रॉफी छा जे लाइ यूज़ थींदी आहे जल्दी सां ॿुधायो मूंखे अपॉस्ट्रॉफी छो यूज़ कंदा आहियूं असीं whenever we use apostrophe in English what is the reason why do we use it jaldi sa batayo mukhe okay jaldi sa batayo mukhe apostrophe cho use karna ayu cha je la use karna ayu okay by the end of this section the students will be able to recognize and use apostrophe to show possession already te likhel hai तो जॾहिं असां possession शो कंदा आहियूं contractions ठाहींदा आहियूं उन टाइम ते असां apostrophe यूज़ कंदा आहियूं हिते possession जी ॻाल्हि आहे ॿिया यूज़ेस आहिनि जेके मां तव्हांखे ॿुधायां थी पर हिन बुक में जेको यूज़ ॾिनल आहे apostrophe जो हिते उहो possession जो आहे जॾहिं असां कंहिं शइ सां माना कंहिं बि शइ सां belonging शो कयूं त possession शो करण जे लाइ apostrophe यूज़ थींदी आहे ठीकु आहे show possession मुज़म्मिल चए थो good very good हाणे मां ओके नथी चवां okay let's move on हाणे first of all apostrophe जेका हुआ construction जे लाइ यूज़ कंदा आहियूं असीं contraction जॾहिं बि थींदी आहे जॾहिं short form यूज़ कंदा आहियूं for example shorten करण जे लाइ कंहिं word खे ठीकु आहे उन जे sound change थी वेंदो आहे omit कंदा आहियूं के sounds उन मां असां apostrophe represent कंदी आहे missing letters के ठीकु आहे जॾहिं missing letter हुजे त उनखे apostrophe show कंदी आहे represent कंदी आहे auxiliaries verbs and modal verbs सां गॾु घणो करे असां यूज़ कंदा आहियूं जॾहिं construction यूज़ कयूं ठीकु आहे for example he would he'd I have I they are there ठीकु आहे you cannot you can't इहो हिकु यूज़ आहे contraction जो उन खां पोइ apostrophe possessive noun सां गॾु यूज़ कंदा आहियूं असीं जीअं for example the rules about forming possession probably cause the most apostrophe confusion your confusion they are very little bit depending on what type of noun you are making in possession so look at this for most singular nouns add apostrophe plus s singular sa agar apostrophe lagandi and s lagando very very important इनमें इलाही सारा स्टूडेंट्स मिस्टेक कंदा आहिनि त सिंगुलर सां गॾु छा कंदा आहिनि apostrophe बि s खां पोइ आणे छॾंदा आहिनि जॾहिं सिंगुलर हूंदो त dogs leash ठीकु आहे dogs जे जेको आहे न हाणे dog हिकु आहे apostrophe उन खां पोइ आई s असां उन खां पोइ आयोसीं त ॿुधाए थो त हिकु जेको आहे dog आहे हिते the writer's desk the planet's atmosphere हिकु planet जी ॻाल्हि था कयूं हिकु writer जी ॻाल्हि था कयूं हाणे for most plurals nouns add only an apostrophe the dogs हाणे इलाही सारा थी विया त पहिरियां dogs पूरो प्लूरल लिखंदासीं उन खां पोइ apostrophe s जे मथां ईंदी सिंगुलर जॾहिं लिखियोसीं पे त ओॾी महिल छा थियो हुयो s पहिरियां न पिया हणो apostrophe हणी करे पोइ s हयोसीं असां so this is very very important ठीकु आहे okay so it's mine property ठीक है so this is how we use it possession show करण जे लाइ for plural nouns that do not end in s add apostrophe plus s ठीक है for example जॾहिं plural nouns हुजन for example children जॾहिं children जी ॻाल्हि था कयूं it means we are talking about more than one ठीक है इलाही सारा ॿार आहिनि जिन जी ॻाल्हि था कयूं त पूरो वर्ड अची वेंदो उन खां पोइ apostrophe ईंदी ऐं s ईंदो ठीकु आहे छो जो चिल्ड्रन पाण ई प्लूरल आहे उन सां गॾु s हणण जी असांखे ज़रूरत कोन्हे का geese again geese is what plural उन खां पोइ apostrophe आईसीं and s हणी छॾियोसीं ठीकु आहे so plural सां कीअं यूज़ कंदा आहियूं असीं
यो भी like important आहे plural सा क्या use थींदो आहे do not like use unnecessary apostrophe to use अच्छा ही like important आहे look at this हाणे हिते ही ॾिसो read the text given below and underline the nouns ठीक है पहिरियां चवनि था nouns खे underline कयो हाणे ॾिसो हिते Salma and her family are going for a picnic they put the food and drinks in a picnic basket. Father puts the breakfast in the car is old its color is red it can go fast and far. Salma takes her skipping rope. Farid takes his football. Father takes his camera. Mother takes her purse. They take their radio. Father will drive the car in the farm ठीक है हाणे nouns इन में ताके खबर है असां पहिरियां ही पढ़ाए चुका आहियूं ताके nouns केड़ा हुंदा आहिनि त ही छा आहे हिकु रिवीजन जे लाइ ऐं क्लास 3 जे बुक में ही एक्सरसाइज ॾिनल आहे पिक्चर ॾिनल आहे उन सां गॾु ॿारनि खे ॿुधायो वियो आहे त nouns केड़ा हुंदा आहिनि ठीक आहे सो टीचर बेसिकली टीचर के नाउन जो कॉन्सेप्ट क्लियर करणो आहे ॿुधाइणो आहे एक्सरसाइज जेतिरो ठीक आहे लेट्स मूव ऑन हाणे अपॉस्ट्रॉफी answer the question using the words from the box Salma's Farid's father's mother's families ठीक है so for example whose skipping rope is it is Salma's skipping rope ठीक है so possession show करने जे लाइ असां ॿुधायूं था प्यारो ठीक है okay so हाणे ही जल्दी सां फिल कयो whose football is there whose football is it it is Salma's, Farid's, father's, mother's, or families. Whose purse is it? It is mother's purse. Whose camera is it? It is father's camera. Whose car it is? It is father's car. Whose radio is it? Whose radio is it? It is what? Look. They take their radio. It is their radio. It is the father's radio. ठीक है? Father जो होयो ना radio भी था. Okay, so let's move on. हाणे ते चाहे तो use apostrophe to show that something belongs to someone. ये कुछ exercise ना सा पढ़ी छॾियूं आहिनि. ठीक है? क्लास का पोइ हिकु दफ़ा ॾिसी वठिजो हिन खे मां वधीक हिन ते discussion नथी कयां. Then हाणे ही छा आहे? Possessive pronouns ठीक है ताके बुधायो असा जरे pronouns पढ़ाया हुआ त apostrophe भी possession show कंदी है and possessive pronouns भी possession show कंदा है ठीक है जिया it is this pen is mine possession तो show करे ठीक है so this is how बिनी जी जेका है वो difference है okay apostrophe हाने possession चाहे possessive noun pronouns show that something belongs to someone. The possessive pronouns are my, our, your, his, her, its, and theirs. There is also an independent form of each of those pronouns. जेके subject and object में use करना है उस ताकि पहले ही पढ़ायो हुयो ठीक है mine, ours, yours ये object में use थींदा आहिनि my, our, your, his ये as a उन में subject में use करना है ठीक है my phone is dead. Pass me yours ठीक है possession तो बुधाए. Did you know that Labrador is mine? The house on the corner is theirs. So इहो भी possession तो बुधाए त हाणे difference आहे apostrophe जो ऐं possessive pronouns जो हाणे ही match कयो जल्दी सां I सां छा वेंदो mine ठीक आहे you जो छा आहे yours he जो his she जो her it जो its ठीक है okay so this is very good question जेको कयो आहे okay so it says that ma'am if there are two brothers having same business ठीक है they are using their name for business then where we have to put apostrophe after or before their name so which name हिक ॿिए जा यूज़ कनि पिया न त अगर फॉर एग्जांपल ॿ नेम्स आहिनि त पहिरें नेम जे सां गॾु न ईंदो लास्ट सां गॾु ईंदो ठीकु आहे उन सां गॾु असां हणंदासीं ठीकु आहे यू जो थी वियो yours
दे जो थी वो theirs, ठीक है, very easy. हाणे possessive pronouns again, it's your hat, थी वियो त थी वेंदो, the ball is his, it's my car. ये कुछ एक्सरसाइजेस आहिनि जिन तव्हां कमेंट्स में लिखी छॾिजो आंसर्स, त पोइ मां इहो चेक करे तव्हांखे रिप्लाई कंदमि, ठीकु आहे. ओके, हाणे हिते इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आहिनि. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस छा हूंदा आहिनि ॾिसो हिते, द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस which is used to convey a command, a request or forbiddance is called imperative. This type of sentence always takes second person you for the subject, but most of the time the subject remains hidden. So imperative hakmiya jumla je ke hundan, hukmiya je ke hundan, command you ke asan ke ka request ke, for example uhe imperative hundan. Hite sentences so kuch examples, bring me a glass of water, hane yo cha hai bro command hai, bring me a glass of water, imperative hai. Don't ever touch my phone, ye cha hai threat hai. Give me a pen and pencil, request hai ke घुरे थो. Wait for me केर चवे थो, ठीक आहे. Get out, what is it, get out. माना हिकदम सां. ऐं हाणे हिते ॿुधाइनि था त इम्पेरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप ते बि ख़तम थींदो ऐं उन सां गॾु गॾु एक्सक्लेमेशन मार्क जेका आहे उहा बि किन किन सेंटेंसेस में ईंदी आहे, ठीकु आहे. सो अगरि एक्सक्लेमेशन मार्क आहे त बि असां चई सघूं था त उहो इम्पेरेटिव सेंटेंस आहे, फुल स्टॉप आहे त बि थी सघे थो, ठीकु आहे. ओके, नाउ एन तव्हांखे ख़बर आहे, वेरी इंपॉर्टेंट. सब कॉन्सोनेंट सां यूज़ कंदा आहियूं, बट इट डिपेंड्स ऑन साउंड. जॾहिं साउंड ईंदो त असां एन यूज़ कंदासीं, वेदर इट्स कॉन्सोनेंट एट द स्टार्ट और इट्स वॉवल एट द स्टार्ट, ठीकु आहे. सो बाक़ी ॿियनि सभिनी सां गॾु लॻंदो. एन जो डिफरेंस हाणे छा आहे, इनडेफिनिट आर्टिकल आहिनि ऐं एन. इनडेफिनिट आर्टिकल आहिनि, जेको आहे बिफोर सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, एन जेको आहे बिफोर द सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड, ठीकु आहे. पर मां तव्हांखे ॿुधायां थी त साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो फॉर एग्जांपल ऑनर, ठीक है, ऑनरेबल, ठीक है. सो दिस इज हाउ द साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाणे ही एक्सरसाइजेस आहिनि, कुछ इन में जल्दी सां पुट करे वठो, न त टाइम लाइक घटि आहे. तव्हां कमेंट्स में इन जा आंसर्स मूंखे ॾिजो त मां पोइ तव्हांखे सुभाणे इन्हनि खे कंटिन्यू कंदासीं, ठीकु आहे. ओके, सो प्लूरल्स, सिंगुलर एंड प्लूरल्स, नाउन्स. So glass, glasses, box, boxes, bush, bushes, bunch, bunches, ठीक है. हाणे I had 1 glasses of milk and 2 glass of juice. What is it? I had 1 glass of milk and 2 glasses of juice, ठीक है. So plural and singular words असां कीअं यूज़ कंदा आहियूं, उहो very important आहे. ॾिसो हिते, ठीकु आहे. For today, guys, comprehensions and the reading practice, practice from book 3, ठीक है. सुभाणे इंशाल्लाह ॿिया book language जो जेके असां कंदासीं. बाकी I'm thinking to bring an other comprehension थोड़ो complicated हुजे तव्हांजे लेवल जे हिसाब सां, त पोइ असां उन ते ॻाल्हाईंदासीं. कुझु क्वेश्चंस हूंदा जंहिंमें प्रपोजिशंस बि हूंदा, ठीकु आहे. सो that was all for today. अगर वधीक को क्वेश्चन आए त तव्हां कमेंट में लिखी सघो था. सुभाणे इंशाल्लाह जीअं क्लास स्टार्ट थींदी मां पहिरियां क्वेश्चंस आंसर कंदमि and then we'll move on to the next lesson, ठीकु आहे. So thank you so much everyone, have a nice day. Allah Hafiz.